Hello students, in this class we will learn about a very important topic in USG, what is time gain compensation in ultrasound. The problem is what? The signals weaken with depth. As the sound waves travel, they become weaker. Ultrasound signals lose strength as they travel deeper into the body tissues. This creates what it does, it creates unbalanced image. Deeper structures appear darker, making the overall image difficult to interpret एक्यूरेटली. जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, सुपरफिशियल टिश्यूज़ हमें ठीक से दिख रहे हैं, लेकिन एज वी मूव डाउनवर्ड्स इन डेप्थ तो नीचे इमेज जो है हमें साफ नहीं दिखाई दे रही है. दिस इज़ द प्रॉब्लम. वट इट इज़ कॉल्ड एज सिग्नल अटेनुएशन. कि जैसे जैसे साउंड वेव्स नीचे साउंड वेव्स नीचे ट्रैवल करती हैं इतनी डेप्थ में, तो उनका सिग्नल जो है अटेनुएट होता जाता है. Then what is the solution? Solution is time gain compensation. What it does is, it does what? Time gain compensation amplifies the deeper signals. It selectively boosts signals arriving later from greater depths to equalize the brightness. What it does is, it achieves uniform grayscale picture. This result is a smooth, consistently lit image from superficial to deep structures. This is the time gain compensation here. It is available in all machines and it is available for manual control also, and is critical for quality, although often automatic. User adjustment is one of the most important factors for image quality. जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, दैट सुपरफिशियल टू डीप, दिस इज अ होमोजेनस इमेज एंड इन रियल हमें टाइम गेन कॉम्पनसेशन कैसा दिखता है किसी भी मशीन पे, ये दिस इज व्हाट इट इज, टाइम गेन कॉम्पनसेशन. जैसे ही बात हो रही होती है यहाँ पे ये ज़ीरो पे होता है, यहाँ पे ये रीडिंग इसकी बढ़ती जाती है. तो ऊपर वाली जो इमेज है, ऊपर वाला जो भी है, मानो यहाँ पे जो इमेज आएगी ऐसे 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 करके, तो फर्स्ट वाला है वो यहाँ आएगा. यहाँ पे हमें सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी लेफ़्ट में रखते हैं. जैसे जैसे नीचे वाले जो नॉब्स हैं उसको हम राइट में रखते हैं ताकि सिग्नल्स जो हैं एम्पलीफाई कर सकें. दिस इज़ द मैनुअल कंट्रोल ऑफ टाइम गेन compensation. I hope it is clear. Thanks for patience listening.